Hello children, this is 5th standard maths. Chapter name is geometry. In geometry, now circle. Circle. See children, this is a this is a circle shape. One more circle have. This is also circle. ये क्या है? गोलाकार का सर्कल है. सर्कल पे क्या डिफरेंस होता है? अभी स्क्वायर रेक्टेंगल शेप है. दिस इज अ रेक्टेंगल शेप. लाइन सेगमेंट कितना है? लाइन के ऐसा है, स्ट्राइट लाइन है. कभी ट्रायंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर, ये पॉलीगन पे क्या रहता है? लाइन से सेगमेंट कैसा रहता है? स्ट्राइट लाइन, लाइन सेगमेंट रहता है. लेकिन सर्कल डिफरेंस, इट इज़ ऑल्सो क्लोज्ड फिगर. रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर शेप ऑल्सो क्लोज्ड फिगर, बट it is straight lines, line segment we have, and circle also closed figure with the curved line. ऐसा है. सर्कल कैसा है? सर्कल क्लोज फिगर ही है लेकिन कर्व लाइन पे है. नाउ सर्कल, सर्कल इज a closed figure. Circle is a closed figure. So this is also a rectangle shape, but rectangle shape is a closed figure. Rectangle, triangle, all are closed figure. Polygon means a closed figure with more than two line segment. No, circle is a closed figure, but it is not bounded by straight line segment. क्या है? सर्कल क्या है? क्लोज रहता है, फिर ये स्ट्राइट लाइन नहीं रहता है. ये ट्रायंगल, लुक एट हियर, ट्रायंगल पे और स्क्वायर पे स्ट्राइट लाइन रहता है ना, ये लाइन नहीं रहता, कर्व रहता है, कर्व लाइन्स. सी चिल्ड्रन, दिस इज ऑल्सो ए सर्कल ए कर्व. कर्व बोलो तो कैसा है? ऐसा वक्राकार और वो ये है कर्व सरफेस. दिस इज कॉल्ड द कर्व. इसे कहते हैं कर्व्स. लाइन सेगमेंट रहे तो स्ट्राइट लाइन पे, ऐसा लाइन सेगमेंट बोले तो स्ट्राइट लाइन पे रहना है. दिस इज अ लाइन सेगमेंट. लाइन कर्व बोला तो ऐसा रहता है, कर्व. ओके, दिस इज अ कर्व एरिया. कर्व बोला तो ऐसा लाइन सेगमेंट नहीं रहना चाहिए. ए कर्व इज अ क्लोज्ड फिगर. सॉरी, ए सर्कल इज अ क्लोज्ड फिगर. वो रहता है, बंद होके रहता है, क्लोज रहता है, बट इट इज़ नॉट बाउंडेड विद द लाइन सेगमेंट. लाइन नहीं रहता है, कर्व एरिया ऐसा बेंड होके रहता है ना. इट इज़ बाउंडेड बाय अ कर्व्ड लाइन. सो सर्कल इज अ क्लोज फिगर विद बाउंडेड बाय अ कर्व लाइन. सर्कल इज अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय a curved line. Every point on this curved line at equal distance from the fixed point inside the circle. So here circle is a closed figure and the center, यहाँ पे हम डिवाइडर रख के सर्कल को ड्रॉ करते हैं. ऐसा है, सेंटर पे यहाँ पे डिवाइड, दिस इज़ अ सेंटर. एक पॉइंट पे रख के हम सर्कल ऐसे ड्रॉ करते हैं. So this point is the center of the circle. This is O, we can say center. अभी ये सेंटर पॉइंट से कर्व लाइन पे कौन से भी कर्व लाइन को जाने हुआ तो वो क्या है? रेडियस और रेडियस. ओके, ये सेंटर पॉइंट पे, सेंटर पॉइंट से एक लाइन हम एक कर्व एरिया पे ड्रॉ करें तो वो हो गया radii. That become the radius, or this is radius of the circle. We can draw many radius. हमको क्या करना है? ये सेंटर पॉइंट से एक लाइन कर्व लाइन पे ड्रॉ करके कितने हमको रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं. Here we can draw many radius. This is also a radius. We can draw many radius with the center of the circle. We can draw many radius from the center of the circle. This is also a radius of the circle. अभी हमको ये सेंटर पॉइंट पे यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. That is also become the radius. From here point we can draw any line segment, anywhere where line segment on the कर्व एरिया. ये सेंटर पॉइंट से कितने भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, पूरा क्या होता है? रेडियस होता है. रेडियस, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल O. नाउ विल लर्न व्हाट इज डायमीटर एंड द chord and the difference between the diameter and the chord. Children, here this is center
O, and this line OB is a radius and AO is a radius. सेंटर पॉइंट से एक लाइन एक कर्व एरिया पे वक्र आकर है ना, वहाँ पे एक लाइन ज्वाइन किया तो वो हाफ ए एक रेडियस बनता है. अभी डायामीटर बोले तो दिस इज द डायामीटर. फुल लाइन एक कर्व पॉइंट से और एक कर्व पॉइंट तक ज्वाइन करना है. पहला रेडियस के लिए सेंटर पॉइंट से एक कर्व को ज्वाइन किया. तो ये एंड कैसा हुआ, यहाँ पे एक एंड सेंटर पॉइंट से चलकर कहाँ जा रहे हैं, कर्व एरिया पे बॉर्डर पे जा रहे हैं. सो दैट इज रेडियस. यहाँ पे चुहा क्या कर रहे हैं, एक कर्व पॉइंट से दूसरे जगह के कर्व पॉइंट पे जा रहे हैं. दैट इज द डायामीटर. और हियर इट इज पासिंग थ्रू सेंटर. कहाँ पे, सेंटर से पास हो रहे हैं. सो इट इज द डायामीटर. व्हेन द लाइन पासेस थ्रू from the center of the circle and the line passes through the center of the circle, then it is a diameter. एक कर्व लाइन पे और एक कर्व लाइन पर एंड होता है. सो दैट इज अ डायमीटर. सेंटर पॉइंट से एक ओनली वन कर्व joining one touch one curve, that is a radius from center point to one curve area. Both the curve area is line segment passing through a center of the circle, that is diameter. Okay. One more important point here. Center of this fixed point O is the center of the circle. The perimeter of the circle is called a circumference. This is important. The perimeter of the circle is called a circumference. Circumference किस पर, इसका ये perimeter find किया तो वो क्या होता है, circumference बन जाएगा. A, B are 2 points on the circle. Here A and B are 2 points on the circle. They are at the same distance from the center O. कभी भी यहाँ पे for example A 5 centimeter रहता है, 5 centimeter or 6 centimeter. If radius 1 OB is 5 centimeter means OA also 5 centimeter. कभी भी radius same रहता है. इसका circle पे radius एक जहाँ सेंटर से कहाँ भी हम एक लाइन कर्व एरिया को ज्वाइन किया तो दैट रेडियस द मेजरमेंट आर सेम. रेडियस ऑलवेज इक्वल इन वन सर्कल. ओके, but the chord we can get different measurement. Then diameter always passes through the center of the circle. Yeah, this is called the a center point से पास होना है. ये center point इंडिया फॉर एग्जांपल दिस इज दिल्ली. ये दिल्ली से ही पास होना है. कौन सा लाइन हम कहाँ पे भी पहुँचे लेकिन दिल्ली से ही पास होना है center, then it is a diameter. OA line segment OA and OB. This distance between the center and any point on a circle is called radius. The distance between a center and any point on the circle. Center is very important. When the distance between a center and any point on the circle, that is a radius. हमको कितना भी radius यहाँ पे draw कर सकते हैं. Center से कितने भी draw infinite radius यहाँ पे कर सकते हैं. Many radius we can draw, not infinite, sorry, many radius we can draw there. Look at the line segment XY passing through a center. Means हमको जाना है, किधर भी जाने का रहा तो वो सेंटर दिल्ली से ही पास. फॉर एग्जांपल आई एम कनेक्टिंग अननोन थिंग्स विद द नोन थिंग्स. सेंटर ऑफ द सर्कल से ही पास होना है. दैट इज डायमीटर. वी कैन ड्रॉ मेनी डायमीटर्स. ओके, कहाँ से भी हमको डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं. Passing through the center O, the end point X and Y on a circle. XY is known as the diameter of the circle. XY is known as the diameter of the circle. This is passing through a center. And diameter is the biggest chord in the circle. Diameter also a chord. अभी हमको radius पता चल रहा है. Radius means a center से joining any line on the circle. Center से ही यहाँ पे भी ड्रॉ लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं. यहाँ पे भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं. हियर ऑल्सो सेंटर. नेक्स्ट इज डायमीटर ओवर. डायमीटर ओवर तो हमको यहाँ पे ज्वाइन करना है. वी हैव टू ड्रॉ join the line here. Okay, this become the diameter whole. One line curve lines to other line and it should be passes through a center of the circle. Center of the circle से ही pass होना चाहिए, then only it become the diameter. Otherwise that line become chord. Center of the circle से pass हुए तो वो diameter होता है, नहीं तो वो chord है. Now I have this circle. I'll draw and this is O, center of the circle.
O. This is center of the circle O. Now I will draw a line. This line, it is passing through a center of the circle. So this is a diameter. What is this? This is a diameter of the circle. What is this? Diameter of a circle, because it is passing through center of the circle. From I am joining one point to another point. It passing through a center of the circle. And we'll draw in another line, that is chord. One more I will draw here now. chord. यहाँ से एक पॉइंट से और एक पॉइंट को हम ज्वाइन कर रहे हैं. दिस इज़ नॉट ए डायमीटर. दिस इज़ अ डायमीटर. क्यों? वो सेंटर कैपिटल से ही जा रहे हैं. सेंटर, सो यू शुड नॉट यूज़ कैपिटल. ओके, सेंटर ऑफ द सर्कल. ओके, दिल्ली से ही पास हो रहा है, दिल्ली से ही पास होना चाहिए, इसीलिए वो सेंटर है, सेंटर ऑफ द सर्कल. देन इट इज़ अ डायमीटर. यहाँ पे भी हम लोग एक पॉइंट से और एक पॉइंट तक एक लाइन ज्वाइन किए हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट ए डायमीटर. हम ये लाइन को डायमीटर नहीं कह सकते हैं. ये लाइन को हम लोग chord ऑफ द सर्कल वी कैन से chord. यहाँ पे भी chord ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से भी यहाँ. ओके, वी कैन ड्रॉ मेनी chord. वन मोर chord I am drawing here. This is also a chord. What is this? This is also a chord of the circle. This is also a chord, and this is also a diameter is the biggest chord in a circle. ये भी इसका मेजरमेंट डिफरेंट रहता है, लेकिन रेडियस एक सेंटर से हम एक रेडियस को ड्रॉ किया तो उसका मेजरमेंट कौन सा रेडियस भी सेम रहता है, और डायमीटर भी हमको यहाँ से भी डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं. कहाँ पे? वी कैन ड्रॉ ए डायमीटर फ्रॉम हियर ऑल्सो. एनीवे, this is also a diameter. This is also a diameter because it is passing through a center of the circle. But this is chord, this is chord. Here भी हम chord draw कर सकते हैं, यहाँ भी chord draw कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ एक line chord draw कर सकते हैं. Okay, always diameter measurement always same in a circle, and radius also same measurement. And one more thing, radius is a half of diameter. मतलब सेंटर से एक लाइन पे ज्वाइन करें. रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर. देन डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस. हमको यहाँ पे डायमीटर करने के लिए ये ज्वाइन किए तो अब ये 5 सेंटीमीटर है. दिस बिकम द डायमीटर बिकॉज इट पासिंग थ्रू ए सेंटर ऑफ द सर्कल. सो रेडियस इज डायमीटर का हाफ है. Diameter is double of radius. This is important in circle chapter. Then you should know the formula of circumference. Circumference and the perimeter are one and the same in circle. Now here, the diameter of the circle is the twice of radius, means twice of or double of radius. Diameter of the circle is twice of radius. Diameter equal to 2 radii. 2 into radius. Radius is equal to half of diameter, or diameter divided by 2 ए भी कह सकते हैं हम. Diameter divided d by 2 or half of diameter. A line segment whose end point lie on the circle is called a chord. A line segment whose end point lie on the circle. This is our chord. A B पूरा chord है. Oh, this is also chord. From here to here, this is chord. This is chord, and diameter also biggest chord in circle, which is the biggest chord diameter. And diameter के लिए a diameter नहीं बन सकते. Chord and diameter are not equal. This is not diameter, but we can say diameter as a chord also, and it is the biggest chord in circle. Okay, this is chord. यहाँ से एक line one point से another point को join आ रहा है. Diameter, it is passing through center of the circle. Okay. Arc and semicircle. Any part of a circle is called an arc of the circle. Any part of the circle, AC is arc, CB is arc. Any part of the circle, we usually name an arc by the 3 points, where 2 points are the end point and there is a point in between them. Look at the figure ACB. We name it in a 3 letter. ACB is a arc, or here we can give one more name here, and we can say here results. Now PRQ is arc, and it is a semicircle. PRQ is a semicircle.
Half of circle is a semicircle. So we have a circle here. Half of this is a semicircle. Half of this is a semicircle. Okay, we have a circle and half of this circle is become semicircle, children. So semicircle. Half of the circle is a semicircle. Half of a circle semicircle. Therefore, PRQ is a semicircle. PSQ is a semicircle. Note a semicircle is also an arc of a circle. Note semicircle is also an arc. PRQ is a semicircle and it is also an arc. PSQ is an arc or semicircle. Now exercise 7.10. Exercise 7.10. Name the radii and the diameter of the circle. Name the radii and diameter of the circle. Now here, name the radii and diameter of the circle. So radius in this circle, radius and diameter we have to write. Name the radii and the arc of the, name the diameter, radii and diameter of the circle. Now here, radius 0, सेंटर पॉइंट से कौन है, सेंटर पॉइंट पे 0 है. सेंटर पॉइंट पे सर्कल का आर्क और ये कर्व एरिया पे एक पॉइंट आधा, कभी भी आधा रहता है रेडियस. सो ओ बी इज अ रेडियाई, ओ पी इज अ रेडियाई एंड ओ ए इज अ रेडियाई, ओ क्यू आर रेडियाई. रेडियस आर ओ पी, नो प्लेस टू राइट देयर. नो, हम पहले रेडियाई ऑफ द सर्कल रखेंगे पूरे क्वेश्चन का. ओ पी इज अ रेडियाई, देन ओ बी इज अ रेडियाई, देन OA, line OA is a radii, then OQ are radii. Now we will write the radii of this circle. XO is a radii, then OY is a radii in this. And here OA is a radii, then OB is a radii. Center से आधा. OA is a radii, OB is a radii. Now we have to write the diameter. OP is a radii, OA is a radii, OB is a radii, OQ is a radii. Diameter means it should be passes through center. ये center point है ना, ये center point पे pass होना चाहिए, तभी वो diameter बनता है. और एक curve line से और एक curve line पे दो एक कर्व लाइन को और एक पॉइंट और एक कर्व लाइन को ज्वाइन होना चाहिए. सो ए बी इज अ डायमीटर. In this AB diameter, line segment AB is a diameter and diameter here is PQ and it is passing through center. वो important है, center से पास होता है लाइन. जो लाइन सेंटर से पास होता है वो लाइन सेंटर से पास होके दो पॉइंट सर्कल पे रहना चाहिए. एक पॉइंट एक जगह पे और एक पॉइंट और एक कॉर्नर पे सर्कल पे रहना चाहिए. देन हियर एक्स एंड वाई दो जगह पे पॉइंट पे मीट हो रहे हैं एंड पासिंग थ्रू सेंटर से ही पास हो रहे हैं. सो हियर डायमीटर इज एक्स वाई, डायमीटर इज एक्स वाई इन दिस. नाउ एक्स वाई इज अ diameter of the circle. Now here radius we written OA, OB. Okay, now we have to write diameter. Diameter is AB, it is passing through center of the circle. AB is a diameter, AB is a diameter and it is passing through center of the circle. Now name the chord. Chord we have to write. Chord means it is not necessary, it should be passes through center. chord के लिए center से ही पास होना ज़रूरी नहीं है. chord के लिए दो पॉइंट सर्कल का दो जगह पे कौन से किसी दो जगह पे एंड ओके ज्वाइन है तो हो सकता है. सो हियर वन पॉइंट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड एंड्स टू अनदर पॉइंट हियर. ओके, यहाँ पे ए डी इज अ कॉर्ड. ए डी लाइन सेगमेंट ए डी इज अ कॉर्ड और एक लाइन है ए बी, कॉर्ड ए बी इज अ कॉर्ड. देन बी सी, यहाँ पे एक सर्कल्स का एक पॉइंट से और एक पॉइंट को ज्वाइन है. सो कॉर्ड इज बी सी इज अ कॉर्ड. देन डी सी, कॉर्ड हियर इज डी सी ऑल्सो कॉर्ड. एक जगह पे और एक जगह को चल लेके जा रहे हैं. इट्स पासिंग लाइन इज ज्वाइनिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट.
Okay, so this is chord. It is not necessary it should passes through center. Center से ही पास होना ज़रूरी नहीं है. Center से ही पास हुए तो diameter बन सकता है. So it is a AB is a chord joining from one line to a line segment joining from one point to another point. Okay, YAB. DC is a chord, AD is a chord, BC is a chord. AO is a radii and OB is a radii. Means सेंटर से दिल्ली से दूसरे जगह जा रहे हैं, कर्नाटका, बंगाल, क्या आंध्र प्रदेश में, दिल्ली से जा रहे हैं. I am comparing to understand better children. O is the center of the circle. From OA is a radii, OB is a radii, and this is a line segment. And this line segment is a chord. Now here radii is OP, OB, OA. दिल्ली से कहाँ जा रहा है वो देख रहे हैं, देखना चाहिए. सेंटर OP, OB, OA, OQ are radius. Any diameter? Yeah, दिल्ली से ही पास होना, कहाँ भी गए तो भी दिल्ली से ही पास होना है. सो दिस इज इट शुड बी पास थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल. सो BQ is a diameter. Okay, AQP is not a diameter. It is not a straight line. It is a radii. It is not a diameter. Okay, here passing, but it is not straight line. A line segment BQ is a diameter, and OA, OP, OQ, OB are radii और रेडियस. नाउ लाइन सेगमेंट हुआ तो एक पॉइंट का सर्कल पे एक पॉइंट, दो पॉइंट रहना चाहिए सर्कल को. वो लाइन सेगमेंट एंड स्टार्ट होके दूसरे एंड पॉइंट को सर्कल का एंड पॉइंट, सर्कल का कर्व एरिया पे एंड आना है. सो AB इज अ chord, BP is a chord, BP is a chord, then PQ is a chord. Chord PQ are chord. Okay, AB is a chord, BP is a chord, and PQ are chord. And BQ also chord, a diameter also a chord. It is the biggest chord in a circle. BQ is a chord. यहाँ पे diameter always same. If 10 centimeter हो तो or any diameter we can draw. Any diameter you can check the measurement. All diameters are same measurement. डायमीटर कभी भी सेम मेजरमेंट रहता है. रेडियस ऑल्सो सेम मेजरमेंट. OA 2.5 रहता है, OB 2.5 रहता है, OP 2.5 रहता है, OQ 2.5 रहता है. रेडियस इन अवर सर्कल, एनी रेडियस, इफ यू ड्रॉ एनी रेडियस, कितने भी रेडियस ड्रॉ करो वो रेडियस का मेजरमेंट सेम रहता है एक सर्कल पर, सेम सर्कल पे. और डायमीटर भी कितने भी ड्रॉ कर सकते हैं, वो पूरा डायमीटर एक ही मेजरमेंट रहता है. लेकिन कॉर्ड is different. We can get different measurement of chord. AB measurement different रहता है, BP का measurement different रहता है, PQ का measurement different रहता है, BQ का measurement different रहता है. अभी एक circle का biggest chord कौन है? BQ. BQ आता है biggest का, mean because it is a diameter. Diameter is the biggest chord of the circle. In chapter geometry, exercise 7.10, in that fill in the blanks. A diameter is a dash chord of a circle. A diameter is a dash chord of a circle. What is the answer? Diameter is the biggest chord of a diameter is the biggest chord of a circle. A and B are 2 points on a circle. Okay, A and B are 2 points on a circle. Line segment AB is called dash of the circle, chord. It is not passing through center of the circle. Then A and B are 2 points on a circle. Line segment AB is called a it is not passing, it is not mentioned. A center से पास हो रहा है नहीं मेंशन हुआ है. अभी ये पॉइंट सेंटर से पास हुए बोले तो डायमीटर बन सकता है. A and B are 2 points on a circle. Line segment AB is called chord of the circle. The perimeter of a circle is called the circumference of the circle. The perimeter of the circle is called its circumference. The perimeter of a circle is called its circumference. Circumference. The perimeter of the circle is called its circumference. The radius of a circle is dash of the diameter of the circle. The radius of a circle is half of the length of the diameter. The radius of a circle is half of length of a
the diameter of a circle. The radius of a circle is half the length of the diameter of the circle. Understood, children? The diameter is the biggest chord of a circle. First question. Second question. A and B are 2 points on a circle. Line segment AB is called chord of the circle. A and B का 2 point रहे तो a line क्या होता है AB chord आता है. For example, a circle है. It is the center of the point A and B. A and B. It is not passing through center. वो मेंशन नहीं किया है. ये लाइन सेंटर से ही पास हुआ तो वो डायमीटर बन सकता था. ए एंड बी से एक पॉइंट है, ये जॉइन हो रहा है लाइन सेगमेंट में स्ट्राइट लाइन पर रहता है, वो कॉर्ड है. द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. द रेडियस ऑफ सर्कल इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल. रेडियस का भी डायमीटर का आधा रहता है. थैंक यू चिल्ड्रन.